number of turns is n, then this tau total is equal to n I L B, capital B, then sine theta. So what we find, this is n I A B sine theta. This is tau total, and this A is area of cross section. A is area of cross section, that is A is LB. So this tau is equal to NIAB. Tau is equal to NIAB because say theta is 90 degree. So this one is the basic equations that acting when the current is passing through the coil. So what is this? When current I passing through the coil of n number of turns in presence of magnetic field, in presence of magnetic field B, then the torque develop, is tau total, and this tau total is NIAB. This is the first equation of the dynamics of the galvanometer. Now this force is known as deflecting force. This torque is known as deflecting torque. This torque is known as deflecting torque. Yes, Sarthak, what is the problem? In the equation where we have written NILB and B, so one is a breadth and another is a magnetic field, sir? One is the length, other is the breadth. L is the length of the wire and breadth is the width of the coil. And these two. And B is a magnet, and the capital B is magnetic field. Yes. This okay, thank you, capital B is magnetic field. Okay, field, and here I is the current. I am not going to detail that we have discussed yesterday. So yes, these are the things that we have already discussed. Just to review, है ना? ये आदर्श ने कहा कि सर एक बार थोड़ा सा उसको और बता दीजिएगा, तो that's why I am discussing, है ना? आदर्श समझ में आया अब? Yes sir. ठीक है, is it clear? Yes sir. हाँ ठीक, thank you. तो टार्क जो होगा, ये टार्क का एक खास नाम हो जाता है, and this torque is known as deflecting torque, and this is very important. This is the original force that is responsible for the deflection of the coil in the galvanometer. So as we have seen, there is a suspended type or some pivoted type galvanometer. The restoring is there, something like suppose this is the fixed point, and here it is the mirror M attached with this, and this is the coil. This is the coil which is attached with, and here is the pole pieces, magnetic pole pieces, north and south. So what, there is a magnetic field B here, and here it is the current. This current is flowing in this way. So
and this one is the length L. So this magnetic, this is the torque produced in this case. और when the light incident, जब ये मिरर के ऊपर, this is the mirror, मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर के स्केल पे जाएगा, दैट इज कॉल्ड लैंप स्केल अरेंजमेंट. उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, है ना. तो ये डिफ्लेक्शन से क्या होगा कि जो पिवोटेड है, सपोज दिस इज द पिवोटेड टाइप, again this one is the same case, here it is the pole pieces, here it is the coil, and this one is the 0 point. Initially it is here, and then it will deflect in the sense of this theta. So either suspended or pivoted. In both the case of the galvanometer, after deflection, these are trying to come in original state. So for original state, there is a restoring force. Restoring force. है ना? So restoring force is due to, this force is due to the elasticity. This force is due to the elasticity. Elasticity. And the equation of motion. And the equation of motion is as this torque is I is the moment of inertia, and this is the d2 theta by dt square. This is dt theta, d2 theta upon dt square is the torque. This torque is equal to, torque is equal to minus c theta, minus c theta. So where c is known as twisting couple, per unit twist, twisting couple per unit twist. And negative sign indicates this torque is in opposite direction. Opposite direction, because it will try to make it back. Torque, just suppose this one is deflecting in this direction, this is torque original, so restoring force will acting in this direction so that it will achieve its original position. So restoring force, this restoring force is equal to the deflecting force. This one is the deflecting force. Here it is deflecting force. So what happens in equilibrium? Both these forces are equal. In the equilibrium, yes. सर ये I टॉर्क इज इक्वल टू I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये कैसे आया? ये इक्वेशन जो है अभी बताते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia into angular acceleration. ये नाम सुना है? This is angular acceleration. So this I into alpha, angular acceleration क्या होगा? I into alpha. ठीक है. तो अल्फा क्या होगा? यदि थीटा डिफ्लेक्शन है तो d थीटा बाई dt क्या होगा?
एंगुलर वेलोसिटी, है ना, दिस और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt, है ना। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी रोटेशन होगा तो पहले क्या होगा, थीटा क्रिएट होगा, थीटा क्रिएट होने से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो ये जो होगा, दिस इज आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ठीक है, दिस इज स्टार। तो ये किसके लिए हुआ, ये पोर्शन डिफ्लेक्टिंग के लिए हुआ, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, है ना, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स किसके बराबर हो रहा है, माइनस सी थीटा, ये किसके लिए हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई है निडल और ये निडल डिफ्लेक्ट हुआ, करंट फ्लो होने से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट होने के बाद जब करंट हटेगा तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, है ना। ओरिजिनल पोजीशन में क्यों जाता है, क्योंकि देयर इज ए रिस्टोरिंग फोर्स। और ये दोनों को इक्वेट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, और आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस c थीटा इज इक्वल टू 0, और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस c बाई i थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, where this where omega square is equal to c by I, या omega is equal to under root c by I, and this is 2 pi by t, it is 2 pi by t. So RT is equal to 2 pi under root I by c, ये है, this is your time period, है ना, this is your time period, ठीक है, time period। और ये क्या है, this one is equation of motion of the galvanometer, equation of motion of galvanometer in free state, free state का मतलब नो डैम्पिंग, फ्री स्टेट का मतलब नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग का मतलब क्या है, आइडियल केस। तो आइडियल केस में यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, दैट इज टाइम एंड हियर इट इज द एम्पलीट्यूड। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, this will be constant in the amplitude and here it is the, तो ये लगातार इस तरह से डिफ्लेक्ट होता रहेगा। और जो इसका इक्वेशन बनेगा, दिस इक्वेशन इज थीटा ऑफ t इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन होगा जिसका ऊपर ये ग्राफ है, इट इज ग्राफ, है ना। And this point is theta 0, and here it is minus theta 0. Minus theta 0 means suppose this point is theta 0, तो minus theta 0 का मतलब कि जब डिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगा तो this will give minus theta 0 दूसरे डायरेक्शन। और इस तरह से हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है, एंड दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, यही वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो गैल्वोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गैल्वोमीटर,
है ना? This is the equation of motion of galvanometer in free state. Free state means no damping. तो एक्चुअली और आइडियल केस है, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन मोस्ट सिंपलेस्ट केस को रखने के लिए ये आइडियल स्टेट को लेकर के चलते हैं, और आइडियल स्टेट को लेकर चल रहे हैं तो दिस इज द आइडियल इक्वेशन, थीटा टी इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इज दिस इज द ओमेगा दैट इज अंडर रूट सी बाई आई, और ये साइनोसॉइडल ग्राफ हो गया, और इस तरह से ये ऑसिलेट होता है। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है। तो दिस वन इज वन पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन दैट इज फ्री स्टेट। अब इसके बाद हम इसको 3 मिनट और बचा हुआ है टाइम, 40 मिनट का, यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, तो डैम्पिंग को इंक्लूड करेंगे, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टॉप दिस शेयरिंग एंड एंड दी, मैं अभी एंड करूंगा और फिर री स्टार्ट करते हैं, तो फिर ज्वाइन करिएगा।